Sorry. Hello guys, Hello, I'm guys. Marjan and I'm living in Isfahan, Iran, Isfahan, and I hope to see you soon in Iran. The Firuze, the color you are telling about, we also have the same color and we call it Firozi. Firozi. So there, right now, there are some protests going on. Yes, in Isfahan we have some protesting. It's my pleasure to spending time with you and really hope to see you again in Iran and also in Isfahan. But You can eat. like this. Then your driving style is very good. I like it. Thank you so much. Like I've seen many girls driving, but you are the best. Thank you so much. Since how many years you are driving? Near 10 years. Near 10 years. 10, That's why. 12 That's years. why. Wow. तो ये मेरा पीछे हॉस्टल रह गया। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है जिसका नाम है इस्फाहान। एक बड़ी मेट्रो सिटी है ईरान की। और अभी ये मेरे इस बार मैंने किसी काउच सर्फिंग में स्टे नहीं किया। मैं थोड़ा चेंज करके देखते हैं, एक बार यहाँ के ईरान के हॉस्टल्स भी देखते हैं। तो इस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ मैं, अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन अभी मेरा प्लान है, एक मेरी लोकल है यहाँ पे फ्रेंड है मारवान नाम से, और वो मुझे मिली काउच सर्फिंग के थ्रू, और उसने मुझे इन्वाइट किया कि आज दिन में मिलो और मैं आपको अपने साथ अपना ब्यूटीफुल शहर दिखाना चाहती हूँ। तो मैं कहा यार नेकी और पूछ अगर किसी लोकल का साथ मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ा ही आता है। तो अभी मेरा प्लान है, मैं अभी स्नैप टैक्सी बुला रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ, उसके घर, वहाँ से हम उसकी गाड़ी पिक करेंगे, उसको पिक करेंगे और निकलेंगे इस्फाहान देखने के लिए। तो स्नैप टैक्सी लेके मैं पहुंचा था मेरे होस्ट के घर, और वहाँ के बाद मैं उनसे मिला और उसके बाद हम थोड़ा सा घूमने के लिए निकले। कम लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय होस्ट। सो शी इज़ माय होस्ट, हर नेम इज़ मारवान। Marjan. Sorry. I'm sorry. Hello guys, Hello, I'm guys. Marjan and I'm living in Isfahan, Iran, Isfahan, and I hope to see you soon in Iran. Yeah. And okay, what's the meaning of your name, Marjan? You No, know? it's a stone in the ocean. Okay. Yes. It's a precious stone, I think. Yes, exactly. It's the ocean in the ocean. Okay. Marjan in the ocean. And tell me something about your city, this city, Isfahan. You have been living here since long time, I think. You born here? Yes, Okay. I born here, Mm-hmm. and Isfahan is the second city in Iran after Tehran, Mm-hmm. and also is a historical city. It's so nice, and we have a special stone in Isfahan. We say Firuze. Firuze. And yes, Firuze. It's meaning a color. Firuze Yeah, has I a know. color between green and between blue. We say Firuze, and when you visit the city, Mm-hmm. actually in the square you can see the Firuze. Mm-hmm. And this color all of places. Mm-hmm. For example, in the tile, in the mosque, you can see this color Yeah. in all of historical places. Mm-hmm. And for this, here the name is Gombat-Hay Firuzei, means the Firuzei Dam, Uh-huh. the name, Uh-huh. and it's so famous. I hope to see you soon Do here. you know the Firuze, the color you are telling about? We also have the same color and we call it Firozi. Firozi. Maybe. Yeah, or Firoza. So it's like Yes. little bit same, but the color is same. It's like in between blue and green. Yes. Yes. So yeah. And okay, and this place where we are right now, this mountain. Here now we are in the Sofa mountain in the south of Isfahan, Mhm. and in the south of Isfahan is the mountain. The Mhm. other side Mhm. is north of Isfahan, Mhm. and the historical places is the north, Okay. and the modern side is south. Okay. Okay, but there is a very good view of Isfahan city from here. Yes, I exactly. really liked it. Yes. और because आज Friday था, तो Friday is closed here. The markets and everything are closed here. in Friday not close the marketing, Mhm. but historical places yes is closed. Yeah. And if you want to visit the historical places, you must visit these places in week. Mhm. Yeah.
that's why we decided that we should come to the mountain, because on Fridays we can only visit this Yes. place. Otherwise, we would have taken you to some historical places of Isfahan. Yes, of course. Yeah. And after this, what are our plans? We are going to the square. Yes, after here, our plan is visit Esquire. Esquire is so nice, Yeah. very big, and there is 2 mosques, 1 Yeah. palace. I will show you. ओके एंड एक्चुअली अभी ना थोड़ा सा हमें यहाँ पे ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस पूरे एरिया में, इस्फहान में। मेरी होस्ट से भी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि कुछ पानी को लेके कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सो देयर राइट नाउ देयर आर सम प्रोटेस्ट गोइंग ऑन। Yes, in Esfahan we have some protesting because for water, Uh-huh. the government send the water to other city, and Esfahan is dry, and some people wants from government to open the water and solve the problem. Just things, just for Because that's why when I was coming to you, I was facing a lot of problem with the taxi. Some places they are not allowing us to pass. Yes. And then she also told me that while coming, be careful. If you see a group of people, then just stay away from them. Yes. Okay. Because maybe the police thinks he is Yeah, protesting. I'm protesting. And yes. I look like an Iranian. Do I look like an Iranian? Yes, of course. It's some fair. some people say me that I look from like South Iran, from Balochistan. Maybe. Yes. South of Iran, the people has a little dark skin Yeah. and with bear, Bear. and it's exactly And- like you. And do you know, I have a benefit of this as well, because in some of places where there's an entry ticket for tourists, then I made entry with a local ticket, because I look like a local. In Yeah. Iran, all of people very like tourists, really, and it's not different. And also, you were telling me about your business, what work you do. Can you please tell on the camera about your work, your handicraft work you are doing? Yeah, I made some handicraft with wood, and my art. The name of my art is marquetry, Okay. and carving also. But in Iran, don't attention to art. No, but I saw your work is really beautiful. Yes, it's so beautiful, and it's very. My art has very detail. You know, like a puzzle. Yeah. I cut the wood, a small wood, and like puzzle, we fix together, Okay. and finally we made big things, Okay. and I will show you. Okay, and also I'll put the link of her Instagram page in the description, and also down here, so you can follow her and see his amazing Thank you so creativity. much. Thank you so much. Yeah. It's my pleasure. Yeah. So now let's go to the square. Yes, we can go. Yeah. Marjan, your driving style is very good. I like it. Thank you so much. Like I've seen many girls driving, but you are the best. Thank you so Since how many years you are driving? Here 10 years. Near 10 years. 10, That's why. 12, That's yes. why. Wow. This is the scale. No, can you see the Yeah. man? Yeah. It's a horse. Yeah. This is Chogan. Shogun. Chogan. Okay. And I will show you the square, the main reason Okay. for build a square in the Safavi period. Safavi period. Yeah. Yes, Yeah. is a Chogan. It's a playing Okay. for playing Chogan. It's a game. It's a game. It's Ah. a Persian game. Yes, Okay. and so famous. Okay. Okay. Okay.
वाकई में गाड़ी बहुत सही चलाती है मरजान। और अभी हम पहुँचे हैं उस स्क्वायर के पास और एक दो जगह यहाँ पे और हैं वो देखेंगे। और अभी मरजान मुझे रास्ते में बता रही थी कि ये जो इस्फहान सिटी है ये वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ ईरान है। और लग भी रही है, मतलब अच्छे बढ़िया, हर जगह पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और साफ़ सुथरी है, कहीं पे ऐसा ट्रैश वगैरह दिख नहीं रहा। एक अच्छी कमाल की सिटी लग रही है। थोड़ा सा और देखते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम होता है। और अब हम आ पहुँचे हैं इस्फहान की मोस्ट टूरिस्टिक स्पॉट जिसका नाम है नक्शे जहान स्क्वायर। जस्ट लुक एट दिस। तो ये एक स्क्वायर है जिसके चारों तरफ एक बाजार बना हुआ है। द नेम ऑफ दिस बाजार इज ग्रैंड बाजार, ग्रैंड बाजार। यस। एंड अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये डबल फ्लोर का है, 2 फ्लोर्स बने हुए हैं। तो इसमें मुझे मार्जन बता रही थी कि ऊपर वाले फ्लोर पे अक्सर वर्कशॉप होती थी और नीचे दुकान होती थी। द अपर फ्लोर यूज्ड टू बी अ वर्कशॉप बिफोर एंड द लोअर फ्लोर वाज शॉप वेयर दे यूज्ड टू सेल। Excuse me, ask again. The first floor was used to be a workshop. Yes. Where they make things, and in the ground floor they used to sell. Here, the seller man just must sell a handicraft from Isfahan. They can't sell Chinese or something small, something else. Okay. Just they must here sell the handicraft items like carpets. Yes, like carpet. And we have lots of things from with Cooper. Okay. Do you know Cooper? Yeah, Cooper. Yeah, and I will show you, and you can see all of this shop has handicraft, and we have a special handicraft with like silk. Silk, yeah. We made carpet. Iran is silk. famous for handicrafts. Yes, we have a special carpet in Iran that we made with wool and silk. 100 silk is so expensive, and the typical is made with wool. And also we have lots of things. Yeah. And this place is a very famous place, you know. Yes, this place is so famous. The name of this square is Naqsh Jahan Square. Naqsh Jahan means the pattern of the world. Yeah. And you can see the two dawn. Yeah, you can see two dawn. And the other one, the big one, is King Mosque. Okay. And the second is Sheikh Lutfullah Mosque. Okay. And this side is Ali Qapu Palace. Yes, and the opposite side just is the Grand Bazaar. The name of this bazaar is Qaysariye. Qaysariye, it's a local name. Yes, the local name. Yes. Yeah. And this square made built in the Safavi period. Yeah, and after so many years in the other dynasty will change. Okay. And improve the view. Yeah. But still, it's a very good traditional and cultural kind of place, and I'm so thankful to you. You brought me here. You're welcome. I do nothing for you. Really, I do nothing. No, you did a lot. Thank you. It's my pleasure to spending time with you, and Yeah. really hope to see you again in Iran and also in Isfahan. But I'll like to see you in India. I very like to. I have done my term. I came to Iran, but I wanted to stay more as well. But my visa is going to expire soon, so I have to leave. But I'll come again to Iran. No worries. I hope. And you are most welcome to India. Thank you so much. I hope one day. मार्जन इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, तो इसलिए मुझे स्क्वायर पे लेके आई और मुझे यहाँ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता रही थी। तो ये पीछे की तरफ जो आपको ये वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, मैं आपको यहाँ थोड़ा जूम करके भी दिखा दूंगा। तो बेसिकली ये एक राजा का पैलेस होता था जहाँ पे वो बैठ के, और ये जो पूरा ग्राउंड आप देख रहे हो ना, पूरा जो ये स्क्वायर है, ये एक असल में पोलो का ग्राउंड होता था। क्योंकि रास्ते में जो उसने भी वो मेरे को वो पुतला दिखा रही थी, वो भी एक इंसान पुतला वो पोलो खेलता हुआ ही था। उस स्पोर्ट को यहाँ पे लोकल भाषा में कुछ और बोलते हैं, लेकिन मैं समझ गया वो पोलो ही होता है। तो ये जो पूरा ग्राउंड था ना, ये पूरा पोलो का ग्राउंड होता था। इतना बड़ा एक ग्राउंड था जो अब ये इसके साइड में बाज़ार सब कुछ बाज़ार भी बना हुआ था। तो ये था। बाकी वहाँ पे ऊपर बैठ के, ऊपर जो वो किला दिख रहा है आपको, वहाँ पे बैठ के राजा जो यहाँ के सफावी डायनेस्टी का जो राजा था, वो वहाँ पे बैठ के ये गेम देखा करता था। और ये मेरे पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो ये है ब्लू मॉस्क।
तो ये मेरे पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो ये है यहाँ की किंग मॉस्क, और ये भी काफ़ी पुरानी मॉस्क है उसी सफावी डायनेस्टी की। और जो एक मॉस्क आपको इस साइड पे दिख रही है, ये असल में पहले एक मदरसा होता था, जो एक रिलीजियस टीचिंग के लिए स्कूल होते हैं वैसा मदरसा होता था। अब इसको भी कन्वर्ट करके एक मॉस्क बना दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए खुली रहती है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा चिल आउट कर रहे हैं, देख रहा हूँ यहाँ की इस इस्फहान में जो एक खूबसूरत जगहें हैं। बाकी सिटी काफ़ी पीसफुल है, और आज फ्राइडे का दिन है तो बहुत सारे लोग आज निकले हुए हैं यहाँ पे घूमने फिरने मस्ती करने के लिए। एक काफ़ी हैप्पी एनवायरनमेंट है इस स्क्वायर पे यहाँ पे। खाना खाने आए हैं, एक सुगोली रेस्टोरेंट नाम का एक रेस्टोरेंट है, और भाई आके ना मुझे मेन्यू पकड़ा गया है यहाँ पे। कुछ इस टाइप का रेस्टोरेंट है। लोकल दिखने का एक घाटा भी है कि भाई मुझे मेन्यू पकड़ा जाते हैं जबकि मैं पढ़ कुछ सकता नहीं हूँ। देखो, आई नीड हेल्प विद द मेन्यू। Marjan, what is this? The name of this drink? The name of it is the sharbat. Sharbat. Traditional sharbat made by bitmeshk and saffron. Wow, it looks so tempting. So this is rice. okay. The name of this food is kebab hosseini. Okay. And this one is rice with saffron and Okay. zerish. Uh-huh. It's like a red barberry. Okay. And this one is meat Okay. with some sauce. Uh-huh. Yeah. Okay, and this one, thing. the special food for Isfahan, we say biryan. Okay. This is naan. Yes, Naan. sangak. Sangyak. Name Okay. of the sangak. Okay. Yeah. And this one, the water with a small piece of bread. Okay. It's so delicious. And what do you told about this Ah. dessert? This one made with yogurt, Okay. saffron, Mhm. and Some meat. Some meat. Yes. And the it's so sweet. And what's the name of this thing? Khoresht mas. Khoresht. And it's so sweet and like beef. Okay. You can eat. Like this. Wow. Okay, so thank you for welcome. everything. Thank you for showing me around. It was very good It's day, my duty. and the food was also very good. Thank you so much. And you are most welcome to India. Please come to India. I hope. Yeah. Really, I hope. I like to. Ask your husband as well if he can also come. Both can come, and I'll be happy to host you and show Thank you so India. much. Thank you so much. Okay. I hope see you. Yeah. Okay. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye Have bye. a great day. And I hope see you again. Yeah. we will. Okay. Take care. If you need anything, let me know. Yeah. Bye bye. Bye. ओके तो जी मरजान ने उतार दिया मुझे यहाँ पे और चली गई, क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया था, उसको भी कुछ और काम थे, और मुझे भी फिर कल नई सिटी में निकलना है। तो अभी मैं वापस पहुँच गया हूँ जहाँ से इस वीडियो को मैंने शुरू किया था, वही गली वापस आ गई है, और ये आगे की तरफ मेरा हॉस्टल है यहाँ पे।